Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter evolution and the topic what are the evidences for evolution. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2015. So the question is what are analogous structures, how are they different from homologous structures, provide one example for each. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे होते हैं और हमें दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है बट वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो होते हैं जिनकी एनाटॉमी सेम होती है बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर. जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं बेटा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है और जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है. होमोलॉगस ऑर्गन बेटा सेम एनाटॉमी बट डिफरेंट फंक्शन एंड एनालॉगस ऑर्गन्स डिफरेंट एनाटॉमी सेम function. Homologous organs, example thorns of bougainvillea and tendril of cucurbita and forelimbs of bat and whale, and analogous organs, example potato and sweet potato, wings of butterfly and birds. So the answer is analogous structures are the structures having different anatomical origin and basis but showing the same function. Difference: homologous organ result of divergent evolution, analogous organ result of convergent evolution. Homologous organ same anatomical structure but different function. Analogous organs different anatomical structure but same functions. Homologous organs, example thorns of bougainvillea and tendril of cucurbita and forelimbs of bat and whale. And analogous organs का example potato and sweet potato and wings of butterfly and birds. So I hope this question is clear to you. Thank you.